Okay, so today I wanted to show you all event handling. So let's make a new folder. I'll click out and make a new folder. Now is it visible? So I make a folder by the name day 6. Okay, and we'll do event handling. So I make a file, event handling dot html. Okay, so here I make a button. Okay, on the click of this button, I want to show alert welcome. I want to show alert what? Welcome. So one traditional way of doing it was on click. So which is the event over here? Click. And on is a prefix. So on click, what task you want to do? So we can write the task itself over here. So this is called as your inline CSS. What I want? So now I'll use a single quote, right? Because double quote will conflict with that double quote. So I'll say welcome to JavaScript. Okay? नहीं नहीं कुछ नहीं बस सिर्फ directly जैसा we had no inline CSS वैसा inline JavaScript ये this is a JavaScript code itself over here. So let's go live and check. Have I saved it? Let's go live. You see a button over here? Click. Okay, let me save the code. If I have not, Control S. Now I come back over here and I click on click. It shows me an alert. Welcome to JavaScript. So this was inline CSS. Now I would not want to write over there for HTML. I want only HTML. In CSS, I only want CSS. And entire JavaScript, I want to go to the end of the day. Then I will split it, right? So whatever we did yesterday, what would we do in the end now? What would we do in the end? Move all this to a CSS file. Move all this to a HTML file and move the script to the is right. So we'll distribute there. So here also I don't want this to be over here. So what would I do? So let me take a new button now. Okay. So one other way of doing that would be on the on click. What do? You call a function. This. So what am I doing? I'm on the click of this. I'm calling this function display. So where should I write this function now? Where should I write the function? In the script tag. I'll have a function by what name? This. Okay, and then I'll write the same over here. Here I'll just write the detailed one. Okay, both are good. Still the event handling is done where? In the HTML only. So let's save it and let's come here. Now I have two buttons. When I do go to click on click, shows welcome to JS. When I click on new click, shows to welcome to JavaScript, right? Now over here, what we can do, the third operation is, let me make one more button. New click pro.
and I'm not giving anything over here. Now what to do? I want to access this button in my JavaScript. What will I do? ID, class ID, whatever. This is one single button. So let's say I'm giving ID as 1. Now how do I access this over here? Const, const what? Button element 3 equals to document dot. I would go for query selector. I would now go for query selector. Will I use all or will I use query selector or the query selector which hash 1, right? Because it's a ID. So now this button element 3 has access to which button? This button. Now once I have the access of it, I can do many things with it. Like I can change its inner HTML or okay. So I'll say new click pro. So but in which function are we doing this? Okay. So this will just do it as I load the page. So as I load the page, what will I see? New click pro, will I see Apple? Apple, because JavaScript will execute one by one. It will execute this line means it has got access to this, and I've changed the inner HTML to Apple. So will it show me new click pro or Apple? Control S and will only show me Apple, right? So if you want it on a click of a button, then you can put into a function. Okay, now this I have done. Now I want to change this on the click of a function, on the click of a button. Now what will it show? I do a control S. What will it show me? When I click on this new click pro, it should become Apple. So have I given any event handling over here? But I have got the access of this over here. So here I can give the event handling. So button element 3 dot, what do we say? Okay, we'll have to give the event handler. So you see add event listener. What will I say? Add event listener. So this event listener will take two arguments. One is the event. So from this word on click, which is the event? Click. On is just a prefix, right? So it will say on which event click, and then which function you want to execute. So here you have to give the callback function. Okay. So if I say replace text, so this is a callback function. There should be a function by what name? Replace text. So I'll add a function replace text, and whatever code was there, I'll add it over here. Got it? So how have I added that click event through a event listener? So I have got access of this button, and once I have the access of the button, I can add, I can change the text, I can add CSS, and I can also add event. So button 3 dot add event listener, which event? And on click which call which function? Replace text will come over here and will execute this code. Let's check this. So what will I see on the screen? New click pro or Apple? New click pro. When I click on it, it becomes Apple. So how did I add that event? By using add event list. Is that making sense? Clear? Thorough practice. Now we are just changing the text, right? So we are just changing the text, right? As I refresh, it new click pro, as I click becomes Apple.
I want to add more styles to it, but I want to add only one style, that is just the background color. So how do I do that? So did I share this with you all? Applying CSS through JavaScript. So one is the inline CSS. Take the element dot style and whatever style you want to give as a camel case. So how will we do that? That is the inline CSS. Gets the highest priority. So button element 3 dot style dot which one? Background color. Okay. So what is the syntax? And you have to give the equal to and whatever color you wish to give. So let's check this out if it works. Saved. Click OK. Changes the color to yellow. So this was one way of adding the styles. Another way is you do the set property. Which property? And here you can give whichever style and the style value like we would give in CSS. So here it is kebab case. Background hyphen color and the yellow over here. Okay, so if you want to override that, but inline will be given highest priority, correct? So let's try to do that. Button element 3 dot set property, right? What is it? Style dot set property dot style dot set property. The method. So which property given single quotes? So here the property is background color, and after the comma you can give the value whatever. If I say background color and I give red, what would happen? Let me comment this out. Let's check if it converts it to red color or what. Okay. So if I would have done this, now what? Because it is coming after yellow, right? That's what. But the highest priority is given to the inline CSS. This is your inline CSS. Okay. Second way, and third way was you make a style class and directly add that class. You make a style dot class blue bgc blue and directly add that over here. So if you don't want to do it with a set property, neither you want to add the style, then what we can do? Button element 3 dot class list dot add. What is it? Class list dot add. You can add one more class dot class list dot add. Which class? Control S and should make it into a blue color. So by these many ways you can try to add. If you want to add multiple style, this would be the best thing. Okay, so if you wanted to add multiple things, okay, you want to give padding of 5 pixels, okay, and if you want to give a border, okay, of 2 pixel solid green and a border radius of 5 pixels, if you want to give multiple properties, then this would be a good option. What happened? Spelling of green क्या? ठीक है, कंट्रोल एस. ठीक है, आपके ऊपर है आप क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो. ये डिफरेंट वेज है टू ऐड द सिंटैक्स, एंड दिस इज हाउ यू ऐड अ इवेंट लिस्टनर.
Okay, so we can add other events also. So if I have a text box, let's say if I have a text box, so input type equals to text, okay, ID equals to text1. So let's save it. I got a text box, and now so y'all are familiar with this, right? So let me take this into a new file then. Maybe there we can do something. Event handling one dot HTML. Okay, so I write this over here. I use my script tag. Okay, and we'll have a button over here. Control S, and let's check how this is looking. So it's looking like this. A button and some data over here. Okay. So now when the user clicks on the button, I want to display whether the number here is positive or negative or odd or even. Okay. So you can just say odd even. So how do I check that? So I give an ID to the button. JS. What is the so how do I read this now into my script? Const button element equals to document dot query selector found JS1. Right now to this I want to add a listener dot add event listener. Which event listener? The first part is the and second part is the arrow function. So let's say we are checking for positive, negative. So it's a arrow. This is a callback. So do not give brackets. It's not a function call. It is a callback function. So come inside the function pause neg, and what will we do now? We'll read the text also. What is the ID over here? So let's read that outside that we can use it across globally across many functions. So how would that be? Text element, which one? ID, text one. If I'm using it for JavaScript purpose, I'll use JS text. Okay. Now what to do? This is the element. I want to read the text data, text box data. So we take this and we say dot value. What do we say? And let's console dot log the text box data and let's check if it's working fine. Okay. So I've just in the HTML part just made two elements. Took the access over here, added a click listener, call this callback function. When it goes into the callback function, read the text box element, and to read its value, we say dot value. That value comes in text box data, and I'm logging that data. Okay, I'm not doing anything else apart from that. I do a save. So I do a 7. Right. Okay, let's open the console and check.
whether it displays me 7. Okay, displaying me 7 over here. So far so good. I'm able to read. Now what to do? Once this is done, I'll comment this out because I just wanted to check whether the data is coming fine. So do a console log and then delete it if you're satisfied with that data. Then what will we do? Take a const. Okay, then we'll put if the text data is greater than 0. So either you alert it or what we can do. So what I can do next is I can make a div over here. जो भी आपको देखना है वो तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा हूँ ना, पॉज नेग कर रहा हूँ ना। ओके, बटन को क्या क्या वाइट लेबलिंग चेंज करता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर div टैग ले लिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ for formatting, and here I have a span. What do I have over here? Span, and I'll give an ID to this span, JS span. Okay, now I want to display that answer over here. Now what to do? तो उसका भी रीड कर लो, बोलो const span element equals to document dot query selector, कौन सा? JS span, right? And then what to do? If everything this is all is well, then span dot in HTML what number is positive, right? Else number is negative. Correct? Let's check. Control S. I take -8 and click. It says number is negative over here. ठीक है, यहाँ BR दे देता मैं, बटन के बाद, और फिर if I try to do a 6 and submit, number is positive. Okay, when the number is positive, I want this text box to turn green and the border, the black दिख रहा है, black border, I want that to turn green, and if it is negative, I want it to turn red. अब बोलो, टेक्स्ट बॉक्स इसको लिया ना, तो फिर इसका, तो अभी ये डबल बार करना पड़ेगा क्योंकि डबल लाइन कोड आ जाएगा इसमें, है ना? क्या कर देंगे, डॉट क्या था, स्टाइल डॉट कौन सा वाला लूँ, कौन सा टेक्निक आपको, एक ही हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, एक ही चेंज कर रहे हैं ना, तो सेट प्रॉपर्टी कर दो क्या, सेट प्रॉपर्टी कर देते हैं, ठीक है। तो बीजीसी का हम लोग मालूम है कौन सा है, बीजीसी का मालूम है ना, बॉर्डर ना, ये वाला ना, ये कर दे क्या, तो कैसे करेंगे, पर ये 3 अलग अलग स्टाइल है ना, ये शॉर्टकट मिलेगा क्या इसको, डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी है ना, तो हाइड कर रहा हूं मैं, स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या बोला, बॉर्डर, और वैल्यू क्या बोला, ऐसा चलता है क्या ऐसा, तो मल्टीपल हो जाते ना, चलो देखते, सेमीकोलन नहीं चाहिए, ओके,
और अगर यही अगर हो जाए तो एल्स में जाएंगे और क्या कर देंगे, रेड कर देंगे ना, नेगेटिव, पॉजिटिव. ओके, लेट्स चेक. कंट्रोल एस and will come here. So I enter 8, ग्रीन हो गया. I enter -9, रेड हो गया, नेगेटिव गया. तो ऐसे आप लोग जावा स्क्रिप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. और इवेंट हैंडलिंग में कहाँ से कर रहा हूँ अभी, सारी की सारी स्क्रिप्ट की से. यहाँ पर मैंने कोई भी ऑन क्लिक लिखा नहीं है. क्या यूज करके, क्या यूज करके, ऐड इवेंट लिस्टनर. ओके. अब मुझे ये बटन भी नहीं चाहिए. लेट्स से फर्ज कर लो ये बटन जो है ये भी मुझे नहीं चाहिए, या मैं इसको यूज नहीं करूंगा. मैं डिलीट फ्रॉम हियर देन आफ्टर मेक चेंजेस इनसाइड द कोड, वो एरर आएंगे अननेसेसरी, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ. तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं एंटर करूं, जैसे ही मैं यहाँ पर क्या 9 दबा के एंटर कर दूं, तो अभी देखो 9 पे एंटर करने से कुछ नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स पे कोई इवेंट लिस्टनर लगाया नहीं है. ठीक है. तो कैसे करेंगे फिर, अभी मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ रीड कर लिया, करेक्ट. अब क्या करेंगे, यही काम, डॉट एड इवेंट लिस्टनर. कौन सा, की प्रेस, कौन सी इवेंट, की प्रेस. और उस पर कौन सा रन करेंगे मेथड, यही ना, मेथड यही है ना, पॉज में. ओके. पर अभी क्या करेगा, कोई भी की प्रेस पे रन कर देगा. आप कुछ भी, आप ए लिखोगे तभी भी वो पॉज नेक कर देगा. तो अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, स्पेसिफिक की पे ही करना है, राइट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, सो ये यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, फिर एक बना देंगे एरो फंक्शन. ठीक है. तो क्या करेंगे, हर एक की प्रेस का एक इवेंट होता है. क्या होता है, इवेंट. हर हर एक लिसनर का एक इवेंट होता है. इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल टू कौन सा, एंटर की, तब आप क्या कॉल करो, फिर क्या कॉल कर दो, पॉज नेक को कॉल करो. अब चूंकि ये मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, तो मैं इसको फंक्शन कॉल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ. ओके. So now what am I doing? On key press, now come inside and check what is the key which is being pressed. The key should be, if it is enter, call the pause function. Okay, Control Shift and F. Let's check if it works fine. I save it. I come here. I hit 9. I hit enter. It's not sensing. तो ये जो की प्रेस है, इवेंट यहाँ होता है क्या, नहीं. Let's ask Chat GPT as to what is the exact syntax. Syntax के लिए I go to Chat GPT. Okay. So syntax purpose, I go to Chat GPT. It is saying enter should be the capital E. So I do enter the capital E, and then I try to do 9, hit enter. ओके. पर वो क्यों नहीं कर रहा है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो आ रहा है. पॉजिटिव नेगेटिव तो काम कर रहा है, हाँ ग्रीन हो रहा है ना. और -9 किया तो लैग करके क्यों कर रहा है, पर वो एंटर इज द कैपिटल ई. सिंटैक्स क्या दिया उसने, जो एंटर है वो कैसा है, कैपिटल ई से एंटर. तो अभी मैंने -9 दिया और हिट एंटर किया तो नेगेटिव आ रहा है.
10 किया, हिट एंटर किया, पॉजिटिव आ रहा है, पर फिर वो कलर क्यों नहीं चेंज कर रहा है? फंक्शन ही कॉल किया ना अपन ने तो। देखो देखो अभी आया, देख रहा है अभी? -8 करके एंटर किया तो -8 पे ये क्या तो आ रहा है, और 7 पे ये किया तो हरा भी हो रहा है। और अगर मैं 11 पे एंटर करूं तो पॉजिटिव दिखा रहा है, तो वो क्यों नहीं कर रहा है? इज दैट कोड आउटसाइड? So I'm calling pause neg. That's it. And pause neg is checking the text box का डेटा वैल्यू लेके, बड़ा है तो वो नंबर पॉजिटिव दिखा रहा है और टेक्स्ट एलिमेंट का सेट स्टाइल कर रहा है। इस टेकिंग टाइम टू रिस्पॉन्ड क्या? -8 को एंटर किया, नंबर इज नेगेटिव तो हो गया, अब कलर रेड नहीं किया अब तक उसने। But I'm just telling you all how we can explore the various events, right? So if you want to call a function explicitly like a normal function call, you have to call it within an arrow function, right? वरना बाय डिफॉल्ट वो कॉल बैक फंक्शन माना जाएगा। ये कॉल पॉज नेक को ब्रैकेट देना नहीं है, ठीक है? अगर ब्रैकेट से कॉल करना है उसको तो कैसे कॉल करना पड़ेगा? एरो फंक्शन से। अभी देखो रेड हो गया, टाइमर लगाएगा कुछ, ठीक है? So now if I want to add one more, so now if I want to make one more event handling dot h2 dot html, अब यहाँ पर मैं अगर कुछ ऐसा कोड करने जाऊं कि मेरे पास 3 बटन्स हो, ओके, और तीनों एक ही क्लास के हो, क्या करना पड़ेगा? क्लास इक्वल्स टू 1, क्लास इक्वल्स टू 1 और क्लास इक्वल्स टू 1, ओके। और इस पे रेड हो, इस पे ग्रीन हो और इस पे लेट से ब्लू हो। Now I want to read these button in my script. How will I do that? Tell me. So the button elements, all buttons. कैसे करूँ? Document dot to select all. कौन सी क्लास? डॉट वन क्यों आ गया? तो अब ये कितने एलिमेंट सीड कर लिया इसने? तो अगर हम ऑल बटन्स को कंसोल डॉट लॉग करते हैं और चेक करते हैं तो मालूम पड़ेगा कि 3 बटन्स हुए हैं। Node list 3, right? Correct. So now I want to add event listener on them. So what to do? I'll do a all buttons dot for each, but all button जो है वो क्या है? नोड लिस्ट है ना, तो नोड लिस्ट के ऊपर फॉर ईच कैसे काम करता है? नो, इस पे फॉर ईच काम करता है क्या? तो लेट्स से मैं कंसोल डॉट हाई डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो कितने बार फॉर ईच होगा? 3 टाइम, राइट? तो वी हैव टू राइट द arrow function inside, right?
तो कितने बार कंसोल लॉग हो रहा है? 3 टाइम्स हाई हो रहा है। ठीक है, तो ये टास्क हो रहा है, राइट? तो नाउ हाउ मेनी टाइम्स डू आई वांट दिस टू? तो अभी मुझे कितने बार लिस्टर ऐड करने पड़ेंगे? हाँ, तो हर बटन को ऐड करना है ना, पर हर बटन को ऐड करना है ना। तो अभी यहाँ पर ये बटन आ गई ना, एक एक बटन किसमें आ गई? और क्या करूँ कंपेयर में? बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कौन सा? क्लिक। और उस पर एक फंक्शन कॉल करूँगा, कौन सा? टेस्ट। तो अभी अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ टेस्ट, और जो कि कंसोल डॉट लॉग करता है वेलकम। सो नाउ व्हाट विल हैपन? इफ आई क्लिक ऑन एनी बटन इट विल लॉग वेलकम। कंट्रोल एस। इफ आई क्लिक ऑन रेड, क्या हो रहा है? गायब क्यों हो गए वो? रेड ब्लू ग्रीन आ गया। रेड पे क्लिक किया, वेलकम लॉग हो गया। ग्रीन पे लॉक किया, वेल आ गया। ब्लू पे क्लिक किए, ब्लू आ गया। ओके, जब रेड पे क्लिक करूं तो इस बटन का कलर रेड बन जाए, तो कैसे करेंगे? बोलो भाई। हाँ, तो इसको एक इंडेक्स भी होता है, क्या होता है इसको? हर एक को एक इंडेक्स होता है, करेक्ट? तो अब अगर मैं टेस्ट को कॉल करूं और एक इंडेक्स पास कर दूं, तो कैन वी डू अ फंक्शन कॉल बैक लाइक दिस बाय पासिंग पैरामीटर्स? नो। So if you want to call a callback function with parameters, write it within arrow function. अभी थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, ठीक है? एंड नाउ आई एम कॉलिंग व्हाट? टेस्ट विद इंडेक्स, और अभी इंडेक्स इसमें आ गया। अब नाउ लेट्स लॉग द इंडेक्स। लेट्स लॉग द इंडेक्स, दो कंट्रोल एस। ठीक है, रेड पे क्लिक किया तो इंडेक्स क्या है? ग्रीन पे क्या है? ब्लू पे क्या है? अब आपका खेल समझ में आ गया आपको? स्विच द इंडेक्स एंड देन इफ इट इज केस जीरो, क्या होगा? केस जीरो अगर होगा तो वही बटन रेड होना है ना, तो वो कैसे करेंगे? तो ऑल बटन में आ गया सारा ना, ये ऑल बटन में आ गया ना। तो ऑल बटन्स ऑफ इंडेक्स डॉट क्या? स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी इज अ मेथड विच प्रॉपर्टी? सेट प्रॉपर्टी में कैसे लिखते हैं हम लोग? नॉर्मल ना, बैकग्राउंड हाइफन कलर, राइट? और कौन सा? रेड। और एक ही ट्राई कर लूँगा जब तक हो रहा है। और क्या होगा? और केस वन और केस कंट्रोल एस। Now see how I did that. I first made simple buttons, then I fetched all of them into a node list by using query selector all.
So have given me access to all the buttons. I console.log and saw that all the three buttons are coming. Then to all of them, I did a for each now. तो इटरेट हो रहा है वो. हर इटरेशन में एक एक बटन किस में आएगी, उसका इंडेक्स किस में आएगा. और मैं हर बटन पे ये बटन ले लिया, क्या लगा रहा हूँ, कौन सा, और मुझे कॉल बैक फंक्शन कॉल करना है. अगर कॉल बैक फंक्शन को आपको पैरामीटर पास करना है तो फिर आपको उसको कॉल करना पड़ेगा एरो फंक्शन में. ठीक है. तो फिर मैंने टेस्ट को फिर क्या पास कर दिया, इंडेक्स इस इंडेक्स में आ गया, उसको स्विच कर दिया. तो अगर जीरो आया है मतलब कौन से बटन में क्लिक हुई है, इस पर क्लिक हुआ है, तो ऑल बटन का कौन सा इंडेक्स, जीरो का स्टाइल सेट कर दिया ये. So I'm showing you all the various permutations on which we can add the event listener on one button also. And if you fetch a list of buttons, then how do you add the event listener individually and how you get the task done? Is that making sense?